Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss the most important diathesis that is mentioned in LN Keynotes and different remedies which are mentioned under them. Now friends, I've already uploaded videos of different constitutions, different temperaments which are mentioned in separate places in LN Keynotes, and also have completed the entire syllabus of Organon, of Pharmacy and Repertory, वो भी AIPGT के interest से. So please, if you do not want to miss the upcoming updates and want to view those videos which are absolutely free, all you need to do is subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and let's get started. So डायथेसिस में सबसे पहली डायथेसिस है हीमरेजिक डायथेसिस एंड ये आपको दो रेमेडीज में मिलती है, अमोनियम कार्बन क्रियोजोट. गाउटी डायथेसिस की हम बात करें तो बेंजोइक एसिड, लीडम पाल, ब्राइनिया एंड कॉल्चिकम में आपको ये गाउटी डायथेसिस मिल जाएगी. देन फ्लेग्मेटिक डायथेसिस की मैं बात करूं तो कैप्सिकम में इट हैज बीन मेंशन्ड. देन स्टूमस डायथेसिस इज प्रेजेंट इन डिप्थीरियम, whereas स्टूमस कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो इट इज प्रेजेंट इन एपिस. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाट एग्जामिनर्स check, or these are the points which examiners use to check our caliber. So this is what you need to keep in mind, which is why I have explained both of these things to you all, that stumous constitution की अगर आप बात करो so it is present here, and stumous diathesis की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको diphtherum remedy मिल जाएगी. Then Scrophulus diathesis में Scrophulus obviously related to glands or something, so iodine and sulfur has been mentioned. Next rheumatic diathesis में आपको Phytolacca, Rustox and Spigelia. ठीक है, आपको PRSR, ठीक है, rheumatic, Phytolacca, Spigelia and Rustox. Then tubercular diathesis में आपको सारी खांसी वाली रेमेडीज ज्यादातर मिलेंगी, तो Rheumax, Spongia and PQRST होता है ना, RST. So this is present here. Then lithic diathesis में sarsaparilla obviously has a very good effect in lithic diathesis. Then soric diathesis में आपको मिलेगी Silesia. Now what they will be asking, ये ऐसे easy questions नहीं पूछेंगे. They will be turning this out into like इनमें से कौन सी रेमेडी बिलोंग करती है साइकोटिक डायथेसिस को एंड सोरिक डायथेसिस को. तो एक टाइम के लिए आपका दिमाग क्लिक ही नहीं कर पाएगा दैट साइकोटिक डायथेसिस इज सेम एज लिथिक डायथेसिस. So please keep all of these things in mind and I'm sure you'll be able to crack all of the questions which are shoved towards you by the examiner. So yeah, that's it about today's session. I hope I've made you all understand. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.